बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। दीज आर 3 डिफरेंट एरियाज जिनके अंदर जो है वो पिछले कुछ सालों में ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेंशंस हुई हैं और प्रोग्रेस हुई है। सो दीज इंक्लूड द कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिसिटी and automobiles. But as compared to these two areas, electricity and automobile, computers gain much attention and widespread, and also they have a more tremendous impact on the humanity in a way that how we primarily जो हमारे डे टू डे टास्क होते हैं they have changed significantly. So first of all, we see what are the factors which are primarily affected by the progress in computers. तो कंप्यूटर के जो प्रोग्रेस है उसमें देखें कि कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हुई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और इसी तरीके से कंप्यूटर की जो स्पीड है ये कंसिडरेबली इंक्रीज़ हुई है। अगर हम कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी जो है ये भी इंक्रीज़ हुई है, और साइज़ की बात करें तो अब जो कंप्यूटर है जो कि इनिशियली जो है वो एक पूरा रूम चाहिए होता है उसको, अब जो है वो एक छोटे से स्मार्टफोन की शेप में भी अवेलेबल है। इसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड यूज़र है। जो इनिशियल कंप्यूटर्स थे उनको बहुत कम लोग यूज़ कर सकते थे, उनके लिए इंतहाई ज़्यादा नॉलेज चाहिए होता था, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सिस्टम। लेकिन अब जो है द यूज़र डू नॉट नीड टू नो के प्राइमरली व्हाट इज़ द इनसाइड द कंप्यूटर, दे आर जस्ट यूज़र। वो अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ सोशल नेटवर्किंग की फॉर एग्जांपल उनमें टेक पार्ट कर सकते हैं विदाउट नोइंग के जो सिस्टम है वो क्या। सो दीज आर द फैक्टर्स। कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, स्टोरेज इज कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग, द साइज इज रिड्यूसिंग, पोर्टेबल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एंड यूज़र बेस इज नाउ वाइडनिंग। बहुत ज़्यादा यूज़र्स जो हैं। देन एक छोटा सा उन्होंने कंपैरिजन किया है कि अगर कार्स जो हैं यानी उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना ही जो है वो प्रोग्रेस होती है जितनी कंप्यूटर में है, तो ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। यानी जो है वो कि 1 सेकंड से कम में जो है वो मिलियंस माइल पर आवर की स्पीड वो अटेन कर लेती है, और बहुत थोड़े से फ्यूल में काफ़ी बड़ा ज़्यादा फासला तय कर लेती, और इतना उनका साइज़ कम होता कि जो है वो हम आसानी से उसे एक जगह से दूसरी जगह पैक कर सकते, और इसी तरीके से हम जो है वो उसको रिप्लेस कर सकते। So the computers are primarily based on numerical or digital computation implementation. So initially the numbers are primarily used only to count few things, but over a period of time nowadays the decimal numbers are widely used, and before that we have very few occasions where we need to count things. Initial counting or calculating machine is abacus, which has a history. अभी भी डेकोरेशन पीस के तौर पे यूज़ की जाती है, और सब बच्चों में इसको सिखाया भी जाता है। So this is considered to be the very initial form of numerical computing. Moving forward, one significant progress जबकि जो है वो रोमन नंबर्स को अरेबिक नंबरिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया गया,
और इसके साथ साथ जो है वो मैथमेटिक्स के डिफरेंट एरियाज में प्रोग्रेस हुई, अलजेब्रा, डेसिमल नोटेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड कैलकुलस। सो दिस इज़ द अरेबिक नंबरिंग सिस्टम और उसका जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन। दिस इज़ नाउ वाइडली यूज्ड in the world. The actual known history started with 1642. The mathematician Pascal, which primarily make the first calculator, और उसका नाम भी उसने अपने पास्कलाइन रखा, और उसका जो है वो शेप आप देख सकते हैं, इट इज़ ए मैकेनिकल machine. Then there is a Leibniz who makes some changes into the initial design of Pascal and make an advanced version of the at that time of the machine. Then in the clothing there is a jacquard प्रोग्रामेबल लूम, जिसमें जो है डिफरेंट किस्म के जो डिज़ाइन थे वो थ्रू कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे थे। दैट प्राइमरली मेक ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। Then there's a name Charles Babbage who invented the difference engine, which is another milestone towards the modern computer. Then the Charles Babbage also gave a design of analytical engine, which is the advanced form of his design. And one of the first computer programmers was Lady Ada Lovelace, or she is considered to be the first computer programmer. Then another milestone in the history of computer is the invention of Boolean logic through George Boole, who primarily described how a two-valued logic can be represented. Then in the form of the modern era, which started with 1941, the German Zeus Z3. So Konrad Zuse is the inventor who primarily first time binary floating point electromechanical and programmable computer. And then in 40s, a number of computers come into the market, and as you can see, the size of the computer is huge, take up about a full room, and similarly required special skills to operate. Then in 40s, 1946, the University of Pennsylvania first electronic computer. It is a first digital general purpose programmable computer. And in 1947, the invention of transistors is another milestone, जिसने जो है वो कंप्यूटर्स की जो एडवांसमेंट और प्रोग्रेस में एक अहम किरदार अदा किया, क्योंकि इससे पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी जो कि बल्ब की तरह के होते हैं। जो ट्रांजिस्टर्स थे वो सेमीकंडक्टर डिवाइस, और जो वैक्यूम ट्यूब हैं वो तकरीबन एक टेबल जितनी जगह ले लेते हैं, जबकि ट्रांजिस्टर जो है वो बहुत थोड़ी सी स्पेस जो है वो लेते हैं, फ्रैक्शन ऑफ द एक्चुअल स्पेस। So then a new era of primarily computers started, which is based on the integrated circuit, and this is, according to book, is the third generation of the computers, because first generation is the mechanical computers. They do not have any electrical components,
Second generation is the use of electrical motor, and the third generation is the use of second generation also uses the electronic, but the third generation uses the integrated circuits. Then in Intel in 1971, the first commercially available microprocessor, and then the Intel company launches 8008, 8080, 8086, 286, 386, 486 Pentium, and then so on. अब जो है हमारे पास कोर i3, i5 और इसी तरीके से i7 और कोर i9 ये जो है, और लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स वो इंक्रीज किए जा रहे हैं. सो मोर एंड मोर ट्रांजिस्टर्स आर now being manufacturer are using to make the microprocessor. Now we are moving towards the recent progress in the CPU, that is the processor. Using a pipeline, हम जानते हैं कि जो है वो there is a fetch, decode and execute cycle. So if we make a pipeline in a way that at any point in time program A is being fetched, and similarly program B is being decoded and program C is being executed. So in this way we can define a pipeline in a processor which speed up the execution of the program. So this is the concept in which the parallel processing is used. So the fetch, decode and execute cycle are then become parallel. Then there is also evolution in the software, and the main decision is due to the IBM decision in 1960s कि जो है वो अब जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो खुद नहीं बनाएंगे, वो हार्डवेयर पे फोकस करेंगे. तो इस तरीके से जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस जो है उनका क़याम बदल गया ताकि वो हार्डवेयर को सपोर्ट कर सकें. तो बेसिकली प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की जब हम बात करें तो इसमें एक सोर्स कोड होता है, और उस सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है और वो फिर एग्जीक्यूशन होता है, और इसमें एक ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है, और इस ट्रांसलेटर को आमतौर पे असेंबलर कहा जाता है. द इनिशियल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज, जिसमें सोर्स कोड लिखा जाता था और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता था. In 1959, there are many languages in the market, but mostly Fortran and COBOL are the primary languages which are used. And the assembler is now called a compiler, which primarily used to translate the high-level language computer programs, source codes into the machine-level programs. Fortran is still used, but in a form of an engine which is behind the computation. COBOL is no longer exist, but the COBOL structures has been used in the advanced business languages. So this is an example of a C code on the top and then an assembly code on the bottom. We will learn another language which is Python. Inshallah, we will be focusing on that. Then in operating system area, that is the system software area, initially a program which is called resident monitor is used, and it monitors the user request, and then it converts primarily it gives the ability to user to interact with the system, and then afterward it is called the operating system, and which is a system software, and it composed of different utilities, multiple programs. The main structure which is used in the computer programming is the GoTo,
statement, and this bring the structured computing, and it makes enable creation of while loops, for loops, and if else loop in the computer programming languages. So we can have a computer program in which multiple repetitions or skip of a code exist. There is also a paradigm which is become famous over the period of time, is the object-oriented programming, and usually the languages C, C++, and similarly other languages is supported. The basic concept is the object class, and we can have, for example, this is a general class of cycles, and we can make different cycles based on this class, which can be used by, for example, the racing cycle, the cycle designed for the girls, and the cycle designed for the children. Then there is also object-oriented programming, for example, Java and Python. These are also. Now, there are two different type of languages which are mostly used. One is called the compiled language, and another is called the interpreted language. In a compiled language, the source code is first translated into the machine language, and then it is executed. In interpreted language, the code is run through an intermediate process, and a runtime environment is required to run the code. So, the interpreted languages run inside of a special environment, and it is called an interpreter. So in the last slide we have the evolution of the computer user, because user is now everyone is a user of computer, but initially only a specific engineers and programmers are the initial users, जो कि कंप्यूटर के इंटरनल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, फिर वो उसको प्रोग्राम कर सकते हैं. लेकिन nowadays, because of the operating system are very easy and user friendly, and similarly the applications are very easy to install, and the process is very simple, it's much simplified. So this ends a brief review of computer, the hardware and the software, and especially the operating system. So if you have any question, you may post in your group or ask in the interactive session. Thank you very much.